अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? खैरियत से? आई होप एवरीवन इज डूइंग वेल। चैट सेक्शन मैंने बंद रखी हुई है, ठीक है। वेलकम टू द क्लास। एंड आई थिंक हमें थोड़ी सी क्लासेस को बढ़ा देना चाहिए। एग्जामिनेशंस आर नियर, तो थोड़ा सा ना स्टडीज के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए हमारा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब दिन रात एक करके पढ़ाई पे ध्यान दे रहे होंगे। एंड यू गाइस वुड बी डूइंग एंड गिविंग योर बेस्ट फॉर द स्टडीज। और इसके अलावा जो है, अल्लाह भला करे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी अगर आ रही है अभी भी, देन डोंट फॉरगेट आई एम हियर, आई एम स्टडिंग। मैं फिजिकली भले आपसे 2 या 3 दफा मिल रहा हूँ हफ्ते के अंदर, लेकिन मैं ऑनलाइन आपसे ऑलमोस्ट हर रोज मिलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इंडिविजुअल लेवल पे क्वेरीज को भी मैं सॉर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ट्राइंग माई बेस्ट। और आई एम डूइंग माई बेस्ट इन ईच एंड एवरी सर्कमस्टांसेस। वर्कशॉप्स भी आप ही लोगों के लिए, मेरा भी आप ही लोगों के लिए सजाया जा रहा है कि भाई आप लोगों के लिए अगर कोई बच्ची कुछ ही कसर रह गई हो तो वो करें। एंड alhamdulillah the response is very good. I think we have crossed 400 plus students in the workshop, and we have a capacity of 600 700 की capacity है। so in no time we will be reaching that milestone as well. Once again thank you for your love। और मैं चीजें कुछ अपने हिसाब से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं तजुर्बे में, उम्र में, नॉलेज में आपसे थोड़ा सा ज्यादा बड़ा हूँ, ठीक है। ज्यादा नहीं, थोड़ा सा ही बड़ा हूँ, ठीक है। और मुझे जो लग रहा है कि आपके लिए बेहतर है, आपके लिए बेहतरीन है, मैं उन चीजों पे ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। और लेट मी डू माई जॉब। वट एवर आई एम डूइंग इज इट्स फॉर योर बेटरमेंट। मैं अपने लिए तो कर रहा हूँ कि आपका रिजल्ट अच्छा आएगा तो मेरा फायदा होगा, बट आई एम डूइंग इट फॉर योर एज वेल, ठीक है। तो अब जरा स्टार्ट करते हैं, चैट को ओपन भी कर देते हैं, ठीक है। कोशिश करेंगे चैट पे हम कम से कम जो है ना डिस्कशन रखें। टुडे वी आर गोइंग टू डू हिस्ट्री, सही है। हम सेक्शन 2 के पास को कंटिन्यू करेंगे, हम सेक्शन 3 भी करेंगे। और अगर आपकी कोई इंडिविजुअल फरमाइश जो हमने नहीं करी, मैं वो भी करवाऊंगा। आई एम नॉट डिनाइंग दैट। वी हैव डेज, हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपने हिस्ट्री के लिए सिर्फ रट्टे मारने। यू नीड टू मेक श्योर कि आपकी मेमोराइजेशन जो है ना वो परफेक्ट हो। मेमोराइजेशन पे किसी किस्म का इशू ना हो आपका। बिकॉज इफ योर मेमोराइजेशन इज अफेक्टेड ना, तो देन एक बहुत बड़ा इशू हमारे लिए क्रिएट हो सकता है। तो मेमोराइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू पे ना कोई है ना इशू नहीं आना चाहिए, ठीक है। कोई मसले की बात तो नहीं है। लेट्स गो फॉर इट। अल्लाह रहीम बिन करीम। हम आ जाते हैं पास्ट पेपर्स के ऊपर। सेक्शन 2 के हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे, ठीक है। वर्क बुक खुल गई है ये एक्चुअली। सेक्शन 2 के हम पास्ट पेपर्स कर रहे थे, और हम सेक्शन 2 के कुछ एक दो पास्ट पेपर जो मेरी ख्वाहिशात जो है ना मैं वो कर रहा हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। मैं चैट ओपन करूंगा इन वाइल। अभी मैं जरा एक सवाल ढूंढ रहा हूँ जो मुझे करवाना है। यस, आई एम ओपनिंग द चैट, ठीक है। अच्छा, द चैट इज ओपन, नो नीड टू मैसेज। ये एक सवाल है कि एक्सप्लेन व्हाई was there opposition to the Government of India Act 1935, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को जो है ना बहुत ज्यादा ऑपोजिशन क्यों हुई थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की अगर मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है, अल्लाह भला करे, वो पाकिस्तान इंडिया का तीसरा और आखिरी कॉन्स्टिट्यूशन था। इसके अंदर जितने भी लॉज थे ना, वो सारे के सारे लॉज जो थे वो एक पेपर में थे। और उस पेपर का नाम मुझे चैट सेक्शन में बता देंगे प्लीज। उस पेपर में कितने थे? यस समरा, यू आर राइट। वो पेपर वाइट पेपर था। एक्सेलेंट हो गया समरा, चीटी हो गई है माशाल्लाह लड़की। ठीक है। इसके अंदर 25% इंडियन वोट कर सकते थे, लेकिन अभी भी 75% इंडियंस जो है वो वोट नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या हो गया था, फेल हो गया था। नंबर 2, इन्होंने डायरकी को भी ड्रॉप कर दिया था प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो डायरकी भी ड्रॉप हो गया था प्रोविंशियल लेवल पे। डायरकी का मतलब क्या था, जिम्मेदारियां दो हिस्सों में डिवाइड हो गई थी, एक रिजर्व था, एक ट्रांसफर था। पहले डायरकी फेडरल लेवल पे था, अब डायरकी जो है वो आ चुका था, कौन से लेवल पे आ चुका था, प्रोविंशियल लेवल पे आ चुका था।
उसके अलावा अगर हम देखें तो उसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे इश्यूज थे। हम जरा इसको देखते हैं। यस, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी आ चुका था, 3 नए प्रोविंस भी बने थे, सिंध बना था, उड़ीसा बना था और NWFP भी बना था। तो आपकी ये सारी बातें बिल्कुल सही है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि आप लोग के आंसर्स गलत है। ठीक है, अब इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। सॉरी, गिव मी अ सेकंड। अच्छा, हमने यार क्लास के अंदर गेस्ट पेपर्स करे थे। तो यस जोया, यू आर राइट। हमने क्लास के अंदर गेस्ट पेपर बनाया था। और जब हमने क्लास के अंदर गेस्ट पेपर बनाया था तो हमने दो चीजों को देखा था। दो चीजें क्या थी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है ना, पिछले 4 पेपर से नहीं आया हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट फ्रॉम लास्ट 4 पेपर्स, इट इज नॉट देयर इन द एग्जामिनेशन। तो लाइक इट और नॉट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके पेपर में होना चाहिए। बट ये 100% मैं एक्यूरेसी के साथ नहीं कह सकता क्योंकि मेरे पास गैप कल नहीं है। आई कैन बी रॉन्ग एज वेल। तो इसका आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए अपने पास, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट was not appreciated by the Indian people. The government of India was not appreciated by the Indian people. The government of India Act was not appreciated by the Indian people. Full stop. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो अप्रिशिएटेड नहीं था। किससे अप्रिशिएटेड नहीं था? वो इंडियन पीपल से जो था ना वो अप्रिशिएटेड नहीं था। इट वाज द इट वाज द लास्ट कॉन्स्टिट्यूशन, it was the last constitution of India as well. It was the last constitution of India as well. Full stop. Like the reason for the opposition were the reasons for the opposition were कुछ different points होंगे जो कि शायद सर के ऊपर से भी गुजरेंगे। बट आई थिंक अगर स्लोली एंड ग्रेजुअली अगर आप इसको रीड करेंगे तो समझ में आ जाएगा। द रीजंस फॉर द ऑपोजिशन वर दैट गवर्नर जनरल, that governor general was the head of federation. The governor general was the head of the federation and could exert special powers and could exert special powers. ये मुश्किल टॉपिक है, इसको बुक से और नोट से एक बार रीड कर लेना। वर्कबुक इज गुड, लेकिन नोट्स और बुक एक दफा रीड करनी है, ठीक है ना? दिस इज समथिंग न्यू फॉर यू ऑल, तभी मैं ये करवा रहा हूँ। द गवर्नर जनरल वाज द हेड ऑफ द फेडरेशन एंड कुड एक्सर्ट स्पेशल powers, full stop. All the powers, all the powers and control was in the hand of the British, was in the hand of the British, full stop. Indians were given powers, their voting rights were increased from 2% to 25%, but still, but still 75% Indians cannot vote. This led to the this led to the opposition. This led to the opposition. Full stop. आगे चलते हैं। Provincial governors. Provincial governors also had special powers in the two reserved areas. Provincial governors also had powers in the two reserved areas. Full stop. They had the authority
they had the authority to dismiss ministers and administrations as well. Hindus were not given self rule, and Nehru report Nehru report was not accepted as well. And Nehru report was not accepted as well. Full stop. And Nehru report was not accepted as well. This also led to the opposition. This also led to the opposition. Full stop. Thirdly, the act was opposed in all sides of India. Full stop. The rulers were losing powers. The Hindus considered this as an act of slavery. Full stop. Jinnah's 14 points were not taken into consideration. Jinnah's 14 points. Jinnah's 14 points were not taken into consideration. Full stop. All the powers were retained by the British, which led to the downfall. 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 Third and last constitution है ये. It was the last constitution of India sir. डोमिनियन स्टेटस के अंदर ब्रिटिश और वाइसरॉय जो है ना वो डिफेंस का, ब्रिटिश और वाइसरॉय जो है ना वो ब्रिटिश का था. डिफेंस और वाइसरॉय किसका था? ब्रिटिश का था. डिफेंस और वाइसरॉय किसका था? ब्रिटिश का था. हाँ यस लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं. कॉपी करें इसको, हम आगे चलें. इंडिविजुअल लेवल पे कुछ पूछना है तो व्हाट्सएप कीजिएगा क्लास के बाद, अभी नहीं. ये एक्ट कोई भी नहीं जीता था यार. ये एक्ट जो था ना बेसिकली जो था ब्रिटिश ने इम्पोज कर दिया था. इस पे आ जाए प्लीज. मई जून 2001 क्वेश्चन नंबर, अक्टूबर नवंबर 2009 P1 क्वेश्चन नंबर 1. इस पे आ जाए. अक्टूबर नवंबर 2009 पेज नंबर 48 पे आ जाए. अक्टूबर नवंबर 2009 पे आ जाए. 19 पे आ जाए. सॉरी 9 नहीं 19 है. अक्टूबर नवंबर 2019. जल्दी से आ जाए. नहीं राबिया डायरकी जो था ना वो प्रोविंशियल लेवल पे ना मॉन्फोर्ट में नहीं था, फेडरल लेवल पे था बेटा. प्रोविंशियल लेवल पे जो है ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आया था. लेक्चर को मैं इसीलिए बोलो, देखिए लेक्चर को मिस नहीं करें. आप लेक्चर को मिस करेंगे तो फिर आप है ना यहाँ पे ना बातों को नहीं समझ पाएंगे. आगे चलते हैं. सवाल क्या लिखा हुआ है पेज नंबर 48. एक्सप्लेन हाउ जिन्ना ट्रांसफॉर्म द मुस्लिम लीग बिटवीन 1937 एंड 1939. जिन्ना ने जो है ना कैसे ट्रांसफॉर्म किया था मुस्लिम लीग को फ्रॉम 1937-1939. तो आए जरा जिन्ना की ट्रांसफॉर्मेशन को समझते हैं मुस्लिम लीग को. पेज नंबर 48 वर्कबुक 2 है. पेज नंबर 48 वर्कबुक 2.
हम पढ़ चुके हैं वासी जमाल मोल्डे मिंटो, बयान वो भी करेंगे। आगे चलते हैं। मुस्लिम लीग 48 पेज है। जिन्ना ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया था मुस्लिम लीग को 1937 और 1939 में, आए जरा देखते हैं। मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल पार्टी थी। किसकी पॉलिटिकल पार्टी थी? मुस्लिम्स की। और इसको बनाया किसने था? इसको बनाया था विकारउल मुल्क ने बनाया था। और मुस्लिम लीग का पर्पस क्या था? मुस्लिम लीग का पर्पस था मुस्लिम के राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अब जिन्ना ने मुस्लिम लीग को कैसे चेंज किया, कैसे ट्रांसफॉर्म किया, उसकी बातें करते हैं। कुछ बातें आपको पता है, बस आप माइंडसेट से निकाल के इसके अंदर फ्रेम करेंगे। लेट मी हेल्प यू आउट। आज ये लिखिए अपने पास। मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग was a political party of the Muslims, which was formed by Viqar al-Mulk, which was formed by Viqar al-Mulk, full stop. Muslim League was a political party of the Muslims which was formed by Viqar al-Mulk, full stop. On many occasions, on many occasions, Muslim League protected Muslims' rights, full stop. After failing to unite Hindus and Muslims, Jinnah devoted himself to organize Jinnah devoted himself to organize Muslims. He wanted to bring Muslims on single platform. He wanted to bring Muslims on the single platform, full stop. At the Lucknow meeting, at the Lucknow meeting of Muslim League, Jinnah requested party members to make party stronger from grass root. He argued that in 1937 elections, the Muslim League, he argued that in 1937 elections, the Muslim League won seats in the areas where they were in majority. Full stop. He delivered many speeches. He delivered many speeches in favor of Muslims. By 1938, thousands of people joined the Muslim League, full stop. Jinnah began to urge Muslims to seek political guidance from Islam. देखिए कुछ टॉपिक्स जो है ना, कुछ टॉपिक्स बुक में नहीं है, नोट्स में नहीं है। कुछ टॉपिक्स के अंदर ना आपको बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअल नॉलेज चाहिए, जो कि स्टूडेंट लेवल पे आपके पास शायद ना हो। तो आपके लिए परेशानी हो सकती है, लेकिन वो परेशानी का ये मतलब नहीं है कि आपका रिजल्ट कॉम्प्रोमाइज होगा।
और ये रिजल्ट जो है ना, ये जो सवाल है ना, ये सवाल बहुत ही मुश्किल सवाल है। और ये सवाल ना 10-15 साल में एक आध दफा आता है। तो ये सवाल ट्रबल करता है। ठीक है, इसीलिए मैं ये सवाल करवा रहा हूँ ताकि इस तरीके से रिलेटेड कोई सवाल है तो आपके पास नॉलेज हो। तो जिना बिगेन टुवर्ड मुस्लिम्स टू सी पॉलिटिकल गाइडेंस फ्रॉम इस्लाम। आगे चलते हैं। इट हैड अ पॉजिटिव इम्पैक्ट। It had a positive impact on Muslims. Full stop. In 1938, a woman subcommittee was set up, led by Fatma Jinnah, to involve women in the Muslim League. To involve women in the Muslim League. यस रायान, हम ये भी लिख सकते हैं। रायान ऑलवेज जीता ना, अच्छा ही पॉइंट लाता है माशाल्लाह से। Finally, finally, INC recognize the importance of the Muslim League. INC refused to accept Jinnah's stance. INC refused to accept Jinnah's stance. Yes, Malik Abdul Adi लिख सकते हैं। INC refused to accept Jinnah's stance. By 1939, Hindu Muslims relation were quiet, stranded. Muslims on the call of Jinnah, celebrated the day of deliverance, the day of deliverance to mark an end of Congress rule. Finally, Jinnah was able to attract millions of people to attend the historic session at Lahore. The historic session at Lahore. Full stop. अक्टूबर-नवंबर 2019 का सवाल है ये अयान। जल्दी से कॉपी करें। नहीं, आपको शॉर्टकट यूज करने की कोई जरूरत नहीं है। यस राबिया, मैं रैंडमली भी करूंगा। देखिए मेरे पास मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं रीड कर पा रहा। समझे मेरी बात को, आई कैन नॉट रीड इट। मैं चाह रहा हूँ कि आप बस फोकस करें आंसर के ऊपर, क्वेश्चन को समझने के फोकस करें। मैं रिप्लाई करता हूँ, मैं आप लोगों से मिलता हूँ फिजिकली, मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे इंटरेक्ट करता हूँ, तो यू कैन राइट डाउन योर क्वेरीज एंड यू कैन इंटरेक्ट विद मी। राइट नाउ जो है ना, आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो पास्ट पेपर को समझना और लिखना है, डिबेट करना नहीं है। डिबेट हम एमयूएन कर लेंगे ना, एचएमए का एमयूएन बना लेंगे हम लोग, तब डिबेट करेंगे।
सही है, जल्दी करें, मैं फिर आगे चलता हूँ। चले हम आगे चलें। इसका एक और खतरनाक सवाल है, ये रहा। हाउ सक्सेसफुल वर द 1937 इलेक्शंस, एक्सप्लेन योर आंसर। 1937 के इलेक्शंस कितने सक्सेसफुल थे? अगर हम बात करें ना, 1937 के इलेक्शन कितने सक्सेसफुल थे, तो यहाँ पे देखो हमने इलेक्शंस बहुत छोटा सा लिखा है। फॉर द फर्स्ट टाइम देयर वर इलेक्शंस बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो थे ना, वो 1771 थी। कांग्रेस वन 750 सीट्स। फाइनली कांग्रेस वन द इलेक्शंस एंड कांग्रेस रूल वाज स्टार्टेड। कांग्रेस वन द इलेक्शन एंड कौन सा रूल स्टार्ट हुआ था? कांग्रेस रूल स्टार्ट हुआ था। टोटल प्रोविंसेस कितने थे? 11 थे। कांग्रेस इलेक्शन जीत गया था 9 प्रोविंसेस में। कांग्रेस रूल लास्ट किया था 2.5 साल के लिए। नाउ मुस्लिम, नाउ कांग्रेस started harsh treatment with the now Congress started harsh treatment with the Muslims। तो ये जो है ना, इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, ठीक है। नाउ इसको मैं थोड़ा सा इलेबरेट करूंगा, और अल्लाह भला करे। व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं, शायद हैं एक सेकंड, मैं खुद भूल रहा हूँ। इस नोट से रीड कर लीजिएगा प्लीज। नोट्स के अंदर जो है ना, इसकी डिटेल्स वगैरह जो है मेंशन वगैरह होंगी, ठीक है। मैं जरा आता हूँ, एक सेकंड, आई एम अ बिट डिस्ट्रैक्टेड। गिव मी अ मोमेंट, आई एम कमिंग बैक। मुझे 2 मिनट दे प्लीज। अपॉलॉजीज, हार्दिक उठ गया था और वो पापा पापा कर रहा था, तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था उसकी आवाजों से। चले तो नोट्स रीड करने इसके, और आज ही रीड करना है क्लास के बाद। हाउ सक्सेसफुल वर द 1937 इलेक्शंस, एक्सप्लेन योर आंसर। चलें शुरू हो जाए। लेकिन अपने पास, आफ्टर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, elections elections were held between Congress and Muslim League, full stop. These were the first elections in India, and they were very useful as well, full stop. These were provincial elections. मैं लंबी कर रहा हूँ। These were, दानिश गौरी कंपलसरी का सवाल जो है 10 मार्क का आता है। These were
the only provincial elections, full stop. For the first time, for the first time, Muslims were given separate electorates. For the first time, Muslims were given separate electorates, full stop. Congress won the majority seats. Congress won the majority seats, and were disappointed. Muslims were disappointed, full stop. Congress was the oldest and richest party of India. Congress was the oldest and richest party of India. Full stop. They had experienced leaders. Full stop. Congress won elections in the majority provinces. Congress won the elections in the majority provinces. Full stop. Later on, they started harsh treatment towards the Muslims. Towards the Muslims. Later on, they started the harsh treatment towards the Muslim. Next चलते हैं. लेकिन Jinnah began to urge. Jinnah began to urge Muslims to get united. Jinnah began to urge Muslims to get united, full stop. Muslim League had a very poor performance. Muslim League had a very poor performance, full stop. Out of 489 seats, Muslims won 109 seats. In Punjab, Muslim League won one seat out of 86. Therefore, Muslims felt betrayed by the British. Therefore, Muslims felt betrayed by the Muslims or by the British. Full stop. आगे चलते हैं. Congress rule. Congress rule was started and Muslims had to face a bad time. नहीं मुस्तफा हम वो नहीं लिखेंगे. आगे चलते हैं. The Muslims for the first time fought the elections. यस मैं वही लिखवा रहा हूँ जयान, अब मैं वही लिख रहा हूँ. पैराग्राफ्स को छोड़ दें, रीजंस पे फोकस करें. नो नीड फॉर फोकसिंग ऑन पैराग्राफ. अजाइफा अभी फिलहाल जो हम कर रहे हैं वो कर लें. यस वी आर गोइंग टू राइट. जी मेहदी अली. Muslims for the first time fought the elections
they had no experience of the campaign. They had no experience of the campaign. They also they also learned a lot from this elections. They also learned a lot from this elections. Full stop. Muslims also recognize themselves as a separate nation, as a separate nation. Full stop. However, the 1937 elections taught Muslims to be united and fight for their rights and fight for their rights. Full stop. Like Congress leaders introduce a series of measures which was a threat to Muslims' culture and religion. Muslims' culture and religion. Full stop. जी कांग्रेस ने फर्स्ट टाइम कैंपेन किया था लेकिन कांग्रेस के पास एक्सपीरियंस लीडर्स थे जिनको पॉलिटिक्स की नॉलेज थी हमारे पास ऐसे कोई लीडर्स नहीं थे दुबेर कितना पड़ेगा बेटा शोर फिजा भेज दो फिर चैट पे स्पैम करें मना किया ना चैट पे स्पैम ना करें बंद करनी पड़ेगी आंसर पे फोकस करें कम ऑन जल्दी से अच्छा वैसे ये हमने दूसरा वाला जो आंसर है ये लिख लिया होगा आई एम श्योर मेजोरिटी जगहों पे मैंने लिखवाया हुआ है लेकिन लाइक वी हैव सम न्यू स्टूडेंट्स जिनसे मेरा बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं है बिकॉज दे आर ऑनलाइन फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली तो उनके लिए वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चंस 5 मिनट लगेंगे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा थोड़ा सा मेरी उंगलियों को भी रेस्ट मिल जाएगा और आप लोगों को भी मिल जाएगा ठीक है आए प्लीज explain why the Muslim community objected to the rule of explain why the Muslim community objected to the rule of the Congress party between 1937 and 1939 इसे बंदे मातरम विद्या मंद स्कीम वारदा स्कीम थ्री कलर फ्लैग हिंदू मुस्लिम राइट्स ये सब आएगा तो 1936 में इलेक्शंस हुए थे और कांग्रेस रूल स्टार्ट हुआ था 1936 में क्या थे इलेक्शन से और कौन सा रूल स्टार्ट हुआ था कांग्रेस रूल स्टार्ट हुआ था और कांग्रेस ने मुस्लिम्स को ना टफ टाइम देना स्टार्ट कर दिया था कांग्रेस ने मुस्लिम को क्या देना स्टार्ट कर दिया था टफ टाइम लिखिए अपने पास इन 1936 there were elections in 1936 in 1936 there were elections in 1936 there were elections and Congress rule was started and Congress rule was started full stop after winning the elections after winning the elections after winning the elections after winning the elections Congress started opposing the Muslims
After winning the elections, Congress started opposing the Muslims. Full stop. Due to that, due to that, Congress rule was hated. Due to that, Congress rule was hated. Due to that, Congress rule was hated. Full stop. लेकिन first of all, Azan was banned. First of all, Azan was banned. First of all, Azan was banned. Full stop. There was tax on beard. 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 Full stop. Pigs were pushed into the mosque. Pigs were pushed into the mosque. And the slaughter of cow was also banned. And the slaughter of cow was also banned. Beef खाने की इजाजत नहीं थी. And the slaughter of cow was also banned. Full stop. And the slaughter of cow was also banned. Full stop. Like secondly, Gandhi introduced a scheme known as what the scheme? Secondly, Gandhi introduced a scheme known as what the scheme? Known as what the scheme? Full stop. Teaching was to be done. Teaching was to be done in Hindi. 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 Full stop. Students को respect देनी थी गांधी की picture को with folded arms. Because the students have to pay respect. The students have to pay respect to Gandhi's picture with folded arms. The students have to pay respect to Gandhi's picture with folded arms. The students have to pay respect to Gandhi's picture with folded arms. और ये इंट्रोड्यूस हुआ था स्कूल्स एंड कॉलेजेस में. लिखिए अपने पास, इट वाज इंट्रोड्यूस इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस. It was introduced in schools and colleges. 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 Full stop. लेके अपने पास thirdly, Vidya Mandir scheme was introduced. Vidya Mandir scheme was introduced. Thirdly, Vidya Mandir scheme was introduced. Full stop. It was introduced by Dr. Zakir Hussain. It was introduced by Dr. Zakir Hussain. It was introduced by Dr. Zakir Hussain. It was introduced by Zakir Hussain. It was introduced by Dr.
Zakir Hussain. It was introduced by Dr. Zakir Hussain. Full stop. Muslims were forcibly Muslims were forcibly converted. Muslims were forcibly converted into Hinduism. Full stop. लेकिन it was a temple based learning. It was a temple based learning, which is why Congress rule was hated. It was a temple based learning, which is why Congress rule was hated. It was a temple based learning, which is why Congress rule was hated. It was a temple based learning, which is why Congress rule was hated. Full stop. It was a temple based learning, which is why Congress rule was hated. Full stop. तो ये टेम्पल बेस्ड लर्निंग थी जिसकी वजह से कांग्रेस रूल क्या हो रहा था, हेट हो रहा था, विच इज वाई कांग्रेस रूल वॉज हेटेड. अल्लामा इकबाल और चौधरी रहमत अली ना, चौधरी रहमत अली आके एग्जामिनेशन में पिछले 4 पेपर से नहीं आया है. अल्लामा इकबाल हालांकि आ चुका है. तो अल्लामा इकबाल के तो चांसेस कम है, लेकिन चौधरी रहमत अली खान के चांसेस क्या है, ज्यादा है. नंबर वन. नंबर टू, इन दोनों के ऊपर सवाल आ सकता है कंपैरिजन में, क्या अल्लामा इकबाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है या चौधरी रहमत अली जो थे वो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे. तो हम ये सवाल भी कर लेते हैं. assess the significance, पेज नंबर 54 है. assess the significance of the contributions of Allama Iqbal and Rahmat Ali to the Pakistan movement. सही है. अब इसके अंदर ना आप सारी चीजें लिख देंगे. अल्लामा इकबाल का इलाहाबाद एड्रेस भी लिखेंगे, चौधरी रहमत अली का पैम्फलेट नाउ और नेवर भी लिखेंगे, वो भी आपका आएगा. तो अल्लामा इकबाल भी आएगा, चौधरी रहमत अली का पैम्फलेट नाउ और नेवर भी आएगा. उसके अलावा अल्लामा इकबाल ने कहा था इस्लाम जो है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है, वो भी आएगा. इन्होंने कहा था मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस को ग्रुप टुगेदर करके एक सेपरेट होमलैंड बनाए, वो भी आएगा. उसके अलावा चौधरी रहमत अली ने जिन्ना को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कहा था कि एक्सेप्ट कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, डिमांड फॉर अ सेपरेट होमलैंड, वो भी आएगा. चौधरी रहमत अली डाइड इन लंदन, वो भी आएगा. इनको रिस्पेक्ट नहीं मिली थी, वो भी आएगा. अनफॉर्चुनेटली काम चौधरी रहमत अली के ज्यादा अच्छे थे, बट हमारी हिस्ट्री क्योंकि बायस है, हमारी हिस्ट्री क्योंकि मैन्युपुलेटेड है, तो हम यहाँ पे ना अल्लामा इकबाल को सपोर्ट करेंगे. रहमत अली के साथ हमने ज्यादतियां की है. अब कंटेंट मैं आपको कॉपी में दे चुका हूँ, सेक्शन 2 के बिल्कुल हमने एंड में किया है, ठीक है ना. आंसर आप लोगों ने लिखा है कि नहीं लिखा है उसका मुझे नहीं पता. जिससे लिखा होगा वो जैसे तैसे करके मुझसे चेक तो करवा लेता है. अब मेजोरिटी का मुझे नहीं पता, तो मैं अपना काम पूरा कर रहा हूँ. आई एम फुलफिलिंग माई ड्यूटी. मैं अपनी डेडिकेशन को यहाँ पे सामने ला के रखते हुए इसका आंसर मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है. आ जाए. तो हमें दोनों की कॉन्ट्रीब्यूशंस को कंपेयर करना है. चले, अल्लाह रहीम एंड करीम, पेज नंबर 54 शुरू हो जाते हैं. अल्लामा इकबाल. अल्लामा इकबाल was also known as architect architect of Pakistan, and Chaudhry Rahmat Ali came up with the name of Pakistan, and Chaudhry Rahmat Ali came up with the name of Pakistan. Full stop. Allama Iqbal. Allama Iqbal was the first personality to address the issue of the partition
of India, full stop. He presented the idea of separate homeland. In 1930, he demanded for an independent Muslim state to the Muslim League at Allahabad. Full stop. The concept of Iqbal became the main policy of Muslim League. Full stop. He was an active politician. He was an active politician. He was an active politician. Full stop. He attended the Roundtable Conference. Full stop. He also explained the political situation of India. He also explained the political situation of India. He also said that Islam is a complete code of life. Full stop. He also convinced many Muslims to join Muslim League. Full stop. He also supported the theory of Sir Syed Ahmad Khan. He also supported the theory of Sir Syed Ahmad Khan. Full stop. He was a successful he was a successful writer and a poet. He was a successful writer and a poet. He wrote many books in Persian and Urdu. He promoted Islam and Urdu as well. He promoted Islam and Urdu as well. Full stop. He was given a title, Father of the Ideology of Pakistan. He was given a title, Father of the Ideology of Pakistan. He was given a title, Father of the Ideology of Pakistan. Full stop. मैं पेज टर्न करूं आई कैन नॉट राइट नाउ थोड़ा सा पेन अनकंफर्टेबल है 1 मिनट रुक जाता हूं मैं आई नीड टू स्लीप
नेक्स्ट आ जाते हैं, मूविंग टुवर्ड्स चौधरी रहमत अली. चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली founded the Pakistan movement, founded the Pakistan movement. He began to write about Pakistan. He began to write about Pakistan. Full stop. He wrote a pamphlet. He wrote a pamphlet known as Now or Never. He wrote a pamphlet known as Now or Never. Full stop. He gave a name to the country Pakistan. The word Pakistan means land of pure. The word Pakistan means land of pure. Full stop. P for Punjab. A for Afghania. K for Kashmir. S for Sindh, and Tan for Balochistan. He also requested Jinnah to demand for a separate homeland, which he refused. Full stop. Which he refused. Allama Iqbal and Rahmat Ali both contributed a lot for Pakistan by their writings and participation in Indian politics. However, Allama's contribution were given more credit. However, Allama's contribution was given more